that Greenwich University, having 3 decades of academic excellence, is determined to serve education sector globally and change the lives of students by shaping their future. Greenwich, more than 3,000 alumni all across the world are serving either at top positions or running their own businesses. It's a pride to share that 70% of Greenwich MBA graduates are entrepreneurs, making jobs not for themselves but for others. Dear students, I want you to follow the same path. Say hello to the future. The day is not far when you'd be running the show around here in the field of business, entrepreneurship and management. Mauritius and Greenwich share the common goal of making Mauritius an educational hub for the African region and rest of the world, specifically focusing on Indian Ocean Territory islands. Indeed, today we observed that Greenwich has taken its first step towards that very goal, and there is more to come in the upcoming semesters. We have lined up students from 13 different nations. Dear students, you will be having a multinational linkage during your stay here with people around the globe. You will be making relationships, businesses, friendships that would help you grow in the future, not only to your own countries, but globally. Be stellar. This is my wish. Today, the path of access begins today, which would indeed lead you to wisdom and glory. Just be committed, determined, and ambitious. Hold fast the rope of knowledge extended to you by your teachers. Take their words to your hearts to transform that knowledge into wisdom. Be obedient, be attentive, be practical, and be successful. It is indeed the very moment that all our friends, all those who helped Greenwich be here today, all the people of Mauritius, all those efforts that were made by them to honor their efforts. Because of them, because of the efforts, we are here today. And today, it's a giant leap. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, Dr. Sultan, for those inspiring words. I'm not going to start dancing, I promise. Thank you, everybody, for your attention. And as Dr. Sultan said, this is the evening of our students. This is for them. But while we're here, can I ask you all to fasten your seatbelts? Fasten your safety belts, because we're going to take a little journey, a little virtual journey. We're going to land in the campus, Pakistan, live and direct. Are you ready to join me? Are you ready to join me? Okay guys, here we go. Mauritius campus joins Pakistan campus. I'm Vijay Pamani, you are today host. I am the director to host all this. I think the very honest beautiful and positive Today I'm going to show you Greenwich University's Karachi campus. Let's have a look inside at the Greenwich family. This is our very own lobby. And this lobby is one of the most favorite places of students over here. The class has just ended and you can see a lot of people waiting over here. They wait with their cars, they have lots of sessions over here, and they especially like this space when it's really hot outside. Let's have a look at the rest of the campus. And that's our reception.
And reception is one of the most important places over here since all your queries, all your questions are answered over here and they are very respondent to whatever you ask. And this is our counseling room. Let's have a look inside the counseling room. Over here you can see our counselors counseling a lot of students. They're helping you out with all your queries, whether it's about admissions, whether it's about anything in university, regarding your courses, regarding your attendance. They're always there to counsel you and help you out in the best possible way. Now we are standing outside computer. Let's have a look inside. So over here you can see a lot of students working in the computer lab. This is one of the most important places we have in Greenwich University, Karachi campus. Now our computers are with high-tech technology and we have experts also working over here to help out the students with any concerns they have. Moreover, we have printing facilities, we have free Wi-Fi in the entire campus and the Wi-Fi works really nice in the computer classroom. The Credits Library offers you a lot. From books, magazines, newspaper, it has a lot to offer to the students and this place is extremely optimized during the exams. Also, we have to add a little more about this library. We have Wi-Fi facility over here as well and we have computers over there. So right when you're done with your books and stuff, you can also log in to your accounts. You can also refer to the internet for whatever information you need. And I personally love the magazine collection in this library. And not only this, we have the e-library right over there and you can see the students working very hard. Moving on to our auditorium right now. Assalamualaikum, welcome to the Greenwich family. People, If you have any queries or concerns regarding to your courses, our communication center is there to help you out. And not only queries and concerns, but communication center ensures effective communication with each of the students they have in Greenwich University, Karachi campus. And besides me, let me show you. Besides me, I have a student desk right over here. You can log into your account over here and then you can know your status, check your courses, your timetable and any kind of query which you have regarding your fees allowance, regarding anything which you want to know is right over here inside the library. Now we are at the examination department. The students usually consider this as one of the scariest days. Scary but very important. All your exam queries, all the things regarding your attendance are solved in this department and so this is very, very important. And like we mentioned before that there is huge crowd at communication center when the semester begins. There is huge crowd at the examination center too, just when there are exams coming up on Tuesday. So we'll give you a glance of the examination department as well. And we would like the examination experts to welcome you over here. We're standing outside the office of Professor Dr. A.P. Mughal. Let's see who has to do it. Hello sir, how are you? Good. Here we have Professor Dr. A.P. Mughal and he's the research professor at Greenwich University, Karachi campus. And let's see what he has to do today. Well, on behalf of my colleagues, I was involved I'm a research professor. I've been active in all the research regarding the case. Thank you so much, sir. That's great. Now we are at Center of Creative Linkage Learning. Let's move on to what it is. Like you can see over here, the Center of Creative Linkage Learning has three basic functions. The first one is language acquisition. And under this language acquisition, we teach to learn three different languages which are French, Italian, and Chinese. The second basic function of CCL is Executive Development Program, and the third function which it performs is the corporate communication. Okay, so we're standing outside a very interesting and very colorful place in Greenwich University, the state-of-the-art media lab. Let's have a look inside. So right over here you can see colorful walls, photographs, and this is basically our post-production studio, and we have high-tech technology over here as well, like we had in the computer lab, and it's an outstanding place for media students. Now this place is a practical vision of what you see on TV, like the live camera action you hear on TV. It is practically done over here and you guys can have a very interesting look over here. This little decorated but beautiful window which you're seeing is of our radio lab. Let's have a look inside. This is our room with beautiful interior and this is meant for radio recording and DTV. Let's have a look over here. It's kind of colorful over here. You can see a lot of pictures, a lot of depictions, and obviously it's very high in technology. Hello everyone and welcome to Greenwich Radio Station. You're listening to Akshan Farooq at Audio Diaries. And the DTV is operated by our media lab controllers. Besides me, I have the Greenwich University Research and Development Center, and with that we have the Office of Research
a lot of research experts over here who help students out with their studies. So this is the Greenwich University Research and Development Center, a very useful part of our university. Let's have a look inside. This is a very fascinating sports room, and over here students get a variety of games. From snooker, table tennis, football, Xbox, and a lot more things over here. Not only the sports area, but we also offer education and fitness treats and often found over here. Here we have two cafeterias where you get delicious food in subsidized rates. That's Cafe 1. Over here you have delicious food available in subsidized rates, like I said before, and there's a lot more which Greenwich offers you. There's a variety of food which you can have over here, chill out with your friends, have selfies, and have a lot of fun after your class or before your class. We're now heading towards the office of Madam Seema Mughal, who is not only the Vice Chancellor of Greenwich University, but she's also the woman of substance and backbone of our university. Let's have a look what message she has to give to us. Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished guests, respected members of the diplomatic corps, very dear students and staff of Greenwich University, Pakistan, Mauritius branch campus. Assalamu alaikum and a very good evening. Welcome to Greenwich University, Pakistan, Mauritius branch campus. First, I would like to thank you all for gracing this occasion with your presence at the campus. I am genuinely humbled. It was my utmost desire to be among you on this momentous day, but it was not possible since we are traveling to sign an MOU between Greenwich University and Beckley University. Greenwich believes in globalization and always takes steps to achieve it. We have a number of MOUs with various educational institutions across the globe and are hopeful that MOU between Bangalore and Greenwich University will further enhance optional studies to the students. We at Greenwich are determined in imparting quality education to the youth of the world. We equip them with skills that enables them to cope up with the rapidly growing global world, both professionally and personally. This we have been doing for the last 30 years in Pakistan and are ranked among top 10 business schools in Pakistan by Higher Education Commission. Greenwich has come to Mauritius with the same mission and vision. Let me tell you that immense amount of time and hard work has been put into the formation of this branch campus. It was not easy to attain what we all have achieved. I would like to thank all the staff at the branch campus on behalf of the entire Greenwich University and on behalf of Director Administration and Registrar, Mr. Saeed Mughal, for their constant commitment. This would have never been possible. We would have never witnessed this day without their hard work. At Greenwich, we are working on the vision of Republic of Mauritius, that is, to develop Mauritius as an education hub of the African continent. The growth in the African region is inevitable, and Mauritius is the gateway of this growth. Alhamdulillah, we are so happy today to share with you that the first batch of this campus of students who have arrived in Mauritius. Beside Mauritius, students from Madagascar, Zimbabwe, Comoros, Nigeria, from India, Pakistan, Sri Lanka, and from Nepal are here this evening. The students will have a diverse environment to learn and grow. This would have not been possible without the untiring efforts of all the friends of Greenwich and Mauritius. We are blessed to have all of you over here. The friends have worked with us at various levels of administrative sites, marketing sites of the campus, in Mauritius and the African continent, and above all, arrangement of scholarships to the deserving students to
continue their studies over here. Thank you all. In that, I would especially like to say a few words to the first batch of students. My dear students, we are happy and you are lucky that you have chosen Greenwich for your higher studies. We are determined to equip and help you to step into the global world with confidence, courage, and you become real assets to your family and to your country. During your studies, beside academic studies, you are going to experience various cultures, learn new languages, and will make friends from around the world. Take the best from us and remember that this time will never come back to you. And it is your utmost responsibility to groom and dedicate yourself towards studies only. We hope that you will abide all the academic and the administrative rules and regulations of this university. All of us, including myself, are for you all. During the orientation week, the staff will brief you about the university systems, rules, regulations, and policies. I myself am looking forward to be among you very soon. May you all stay blessed in the beautiful country of Mauritius. Long live Pakistan, Mauritius, French. I hope you all enjoyed your little trip to Pakistan. We are the university where miracles can happen, yes? I hope so. Well, after that little journey into Pakistan, let's come back to Mauritius. Let's come back to Mauritius and our 2017 cohort of students. The students will be recommended, the students will be encouraged to come and represent their country and share in their own language a little bit about why Mauritius, why Greenwich University, Mauritius campus. Let's hear it from them, from their heart. Please, ladies and gentlemen, let's encourage our students as I call upon Ashley from Mauritius to come up and join me on stage. Bonsoir tout le monde. Merci pour votre présence aujourd'hui. Comme une découverte qui était Greenwich University, moi j'ai le dernier brin l'espoir. Mais un samedi, je décide pour aller à l'exposition qui est dans l'université. Et à ce moment-là, je découvert qu'ils ont permis à Maurice à travers Greenwich University. Donc Greenwich pour moi, ça symbolise la réformation, une seconde chance et l'espoir. L'espoir d'un meilleur avenir. Du moment que j'ai franchi cette porte, je me suis tout de suite senti à l'aise ici. C'était comme une deuxième maison, ma deuxième famille qui m'a apporté beaucoup de soutien pour mon épanouissement et mon émancipation. I would like to also take a moment to thank everybody working here, the students, the members of the Greenwich Resource Center, and everybody else that have made this achievement possible. I would like to end by mentioning two quotes that have inspired me since I've become a member of this family. Firstly, it is said that when you desperately want something, the universe conspires to make it happen. And secondly, there is no lemon so sour that you cannot make something remotely resembling a lemonade. I thank you for your attention.
Thank you, Ashley. Now let's welcome Syed Abdul Rahman from Pakistan. ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान सकाफ़त, तहज़ीब व तमद्दुन का गहवारा है और मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान से हूँ और ग्रीनविच यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम तमाम तालिब इल्मों को अपने मुल्क, वालिदैन और असातिज़ा के लिए बाइसे फ़ख्र बनाएं। आखिर में अल्लामा इकबाल का एक बहुत खूबसूरत शेर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you, Syed. Can I call upon Mr. Harvit Singh from India? गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम हरप्रीत सिंह, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Can I call upon Mr. Yudish Dipal from Sri Lanka? සියලුම දෙනාට අයබෝවන්. good evening ladies and gentlemen, welcome to Greenwich. අද ගොඩාක් සතුටු දවසක්. මොකද කියනවා නම් මමගේ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා විදේශ විශ්වවිද්‍යාලයක් වන Greenwich තෝරාගෙන තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව තුළ විදේශ විශ්වවිද්‍යාලයකින් ලබා ගන්න උපාධියක් සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඒක නිසා මම Greenwich University එක තෝරගත්තා. and Greenwich විශ්වවිද්‍යාල ලෝක විශ්වවිද්‍යාල සංගමයේ සතු සියලුම ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව පවත්වාගෙන යන නිසා සියලුම පහසුකම් වලින් සහිත නිසා මම Greenwich University එක තෝරාගත්තා. සියලු දෙනාටම thank you. time no visit thank you. Mr. Anmol Thapa from Nepal. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Greenwich. I am Anmol Thapa from Kathmandu, Nepal. सर्वप्रथम यहाँ पाल्नुभएका सबैजनालाई साथै ग्रीनविच परिवार र मरिसियसलाई म र मेरो नेपालको तर्फबाट नमस्कार। म ग्रीनविच युनिभर्सिटीमा आफ्नो नाम, मेरो नाम र मेरो देशको नाम रोशन गर्न लागेको हो। म अरू देश विदेश गएर पनि पढ्न सक्थेँ, केही सिक्न सक्थेँ। म यो मरिसियसमा आउनुको मेरो ठुलो उद्देश्य यो हो कि यहाँ हामीले विभिन्न देशबाट विभिन्न मान्छेहरू आएर यहाँ बस्दछन्। म अरू देशमा गइकन सिर्फ थोरै सिक्न सक्छु भने यहाँ मैले सबैजनाको सितबाट मैले केही थोरै चिजहरू सिकेर मेरो आफ्नो उसमा धेरै बनाउन सक्छु। त्यही हुनाले म यो मरिसियसमा मैले आएको हो। साथै यो ग्रीनविच युनिभर्सिटी र मरिसियसलाई म फेरि पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु कि हामीलाई नेपालीहरूलाई यहाँ पढ्नलाई आउन दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त नमस्ते।
Mr. Mbeke Clement from Nigeria. Good evening, all. My name is Ebga Clement from Nigeria. Obi dị m ọṅụ, obi m jupụtara na aṅụrị ịbụ nwata akwụkwọ na ọmarịcha skuul a dị n'ọmarịcha obodo a bụ Greenwich University. Na mbụ anọ m na-alọ bụ nlọ n'ofu mbọsị na m ga-abụkwa nwata akwụkwọ na mba ofesi. Odo na mbụ bụ nwata akwụkwọ na ofu na akwụkwọ dịkwa na mba ofesi. Mana ngwa ngwa m nwetara admission na ọmarịcha ụlọ akwụkwọ anụnwa, enwere m mmasị rapụ ihe niile m na-eme na mba nke ọzọ ịbịaba na ụlọ akwụkwọ anụnwa bụ Greenwich University, Pakistan, Mauritius branch. Na-ekenekwa Chineke ma na-asị ka Chukwu onye ọ bụ mmasị ya ime ka ihe anụnwa rute m aka, ka o mekwa ụmụnne m ndị Naijiria, ndị obodo dị iche iche dị na Naijiria nwere mmasị ịbịa ebe a bịa gụọ akwụkwọ, wee na-ekwe ha nkwa na site na amara Chineke na admission ọbụla ha na-arịọ ga-erute ha aka. Ọ gwụcha ka ọ ha m n'ọnụ na nwere isi anụnwa. Amen. Thank you very much. Please, ladies and gentlemen, encourage the students. It takes a lot for them to be. Mr. Aina from Madagascar. Hi everyone, my name is Andrea Manantin Ain Jianza. I'm from Madagascar. Farmiaraba tsika rehetrarehetra, salama daholo tompoko. Raha toka ny safidy ny andra teto amin'ny Maurice aho dia satria firenena tsara ny firenentsika eto, malaza ary akaiky ny tanindrazako. Ary raha toka ny safidy ny université Greenwich University kosa aho dia satria université avolenta, manana ny maha izy azy ary malaza eran-tany avokoa ny Greenwich University. Misaotra betsaka tompoko. Thank you so much, dear students. I know it takes a lot of guts and courage for you to come up first week in Mauritius and to be here and face an audience like this. Well done, every single one of you. And it's amazing to hear why you chose Greenwich. And I'm sure those of you in the audience who could understand every different language, you understand now why these students are here. Thank you again, dear students. 2017, here we come, hey? Come on, guys, it's their evening. And let's be honest, it's not just the students who take into a university, it's also the students who turn out of a university. And I'm really pleased to say that we have amongst us one of Greenwich University Pakistan campus's alumni. He is here this evening to share with us what it means to him being an alumni of Greenwich University. Can I please call on stage Mr. Imran, Siddiq Imran, please? Thank you, Georgina. Faculty, diplomas, excellencies, students, parents, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. Being a former student, you can understand that what kind of a privilege it is for me to be here today speaking to you from this forum. When the views I saw on the Karachi campus, I mean, very nostalgic for somebody like me who spent years over there. When Nawaz actually asked me to say a few words regarding Greenwich today, I was pleasantly surprised and very excited because Greenwich represents
a very important phase of my life and something I love to talk about. But he was very smart. He said, you've got only 5 minutes. Otherwise, they could have gone on for hours. But before, I get into what I actually want to say to the students and to the parents who made this choice, I just want to introduce myself. So I was part of the 93-94 batch, graduated in 95, ancient history for most of you students there. I did my majors in finance, and actually before I got my degree, I ended up in a bank, and I've been a career banker ever since. I went on to become the CEO for Barclays in Pakistan. And then here, I'm the CEO for HBL Mauritius. HBL Habib Bank is the largest Pakistani bank there is. So, that's a bit about me. But more importantly, the message that I actually wanted to share basically stems from my 22, 23 years of hiring people, seeing some of them succeed, some of them not so, and trying to figure out what makes people stick, what differentiates a successful employee from an unsuccessful one, or let's just say, a less successful one. Universities absolutely play a critical role. I think the most important role. These are the career-forming institutions. To me, there are two aspects that are very critical. One is the value of the degree that you are getting. That's very important. How valuable is the degree? The first job I got, it was because of the Greenwich degree. That got me an interview. That opened the door for me. I walked in and I got the job. But to me, that's just the half job done. I think the more important aspect is once you are in, how to be successful. I think that's critical. That's critical because a lot of people get in and then find themselves out of their depth. And that's what basically differentiates people. So now, to me, actually, those universities that prepare people for the real world, I think that's absolutely critical. And I think that's where Greenwich has an edge. And the reason for that is, various aspects to it, but I think the critical aspect is the faculty itself. Greenwich has always employed a very professional faculty. So these are the people who've actually done it in life. These are successful people who have performed well, who have been successful in the dog-eat-dog environment of professional whatever. And these people are now passionate enough to actually pass on that to the students. So the quality of debate that you get when you are up against a professional faculty, that is not just theory. It's very different from what you get from the other side. So that is, faculty and then the curriculum. I think in Greenwich, even in the 90s when I was there, I think there was a huge focus on projects, case studies, presentations, report writing. So theory is important, obviously, but these things, they actually develop personalities. They actually get you in the right frame of mind. It's all about the thought process. It's all about problems and the thought process that you have to resolve those problems. So if you're in an environment where people who themselves have attained senior positions and they're in the room trying to get you working through a case study, so the problems that get resolved are real life problems, and that's what I saw. When I was working, when the real problems hit me, it wasn't very different from my classroom. So that helped me, and I think that gave me a huge edge.
So that's pretty much it. In conclusion, I just want to speak directly to the students and the parents. Trust me, you made the right choice. And you will know what I'm talking about as you progress in your studies and your careers. Best wishes to all of you. Best wishes to Greenwich for truly going international. Thank you very much. Thank you so much, Imran, for those inspiring words. And I'm sure that the students here have taken that to heart and a role model here and now for them to look up to. Thank you so much. I would like to request Mr. Azam Subrati, representing the Ministry of Education, to please join us on stage and share his message from the Ministry. Thank you. Chancellor is not here, right? Okay. All right. Okay. So members of the Diplomatic Corps, accommodations, faculty and management, dignitaries, students, parents, ladies and gentlemen. Good evening and peace be upon us all. I would like to congratulate the organizers, first of all, for such a magnificent show today. It was really quite an emotional, event to see these international students and the national anthems and all that. It's quite an innovation, believe me. I wish to extend the apologies of the Honorable Minister who is taken up in a prior commitment. But I would like to air her thoughts and views with you today and also share my own thoughts on this big experiment here. It is a great pleasure for the Minister of Education and Human Resources, Tertiary Education and Scientific Research to be associated with the orientation launching ceremony of Greenwich University, Pakistan, Mauritius campus. That's quite a mouthful. Mauritius aspires to develop into an education hub, and this has already been mentioned by previous speakers tonight. An education hub of repute in the region, attracting world-class institutions to set up quality higher education branches here. In fact, there are various facilities and incentives that have been put in place to encourage just this. We are also in the process of drafting a higher education bill, which inter alia will be geared towards improving the regulatory framework regarding the higher education sector in Mauritius. The quality assurance framework, a fundamental condition for quality education, will also be enhanced. The process of accreditation of courses at the Tertiary Education Commission will be reviewed in this higher education bill, laying greater emphasis on relevance of courses that meet national and regional needs. We have to aim for regional needs because we want to develop into a higher education hub, bringing people together and for the benefit of everyone and progress of everyone. In fact, we cannot have development, we cannot have peace if we don't have the proper education. Mauritius is a member of a number of regional economic communities such as SADC, the COMESA, the APEI, and has signed agreements and memoranda of understanding with a number of countries that would facilitate the movement of students and business people that would include academicians. And we also encourage our institutions to do likewise. We want our institutions here in Mauritius to be signing memoranda and acting on them, should not just be pieces of paper. And here I would like to congratulate this branch campus here for its MOU with Bangor in the UK. This is a good beginning and I hope it goes on with other institutions as well. Setting up of the Greenwich University, Pakistan, Mauritius branch campus is a testimony of Mauritius making progress in this direction of internationalization, and we're indeed most grateful to the promoters of the project here. Congratulations, this is a very good start. Small beginnings, but I'm sure you will grow up exponentially.
In fact, at this launching ceremony, I would like to welcome students from all these countries and others. You are ambassadors of your countries, and we wish to play the perfect host for you and to ensure that you have the learning experience that will turn you into professionals. So that when you go back to your countries, your respective countries, we can hope that there will be development. And this will act as a break to extremism and all that's associated with that. The labor market in Mauritius and elsewhere is becoming more and more global, open and competitive. The demand for high skills is growing, and higher education, with its link to research and innovation, has a crucial role to play in equipping students with these skills. We want not only to develop into an education hub, but we also want to develop research in all aspects of life that will improve quality of life of the people and their livelihoods. In fact, many people recognize that many professions of tomorrow have not yet been discovered. And so how do you train people for that? It's a big task, and the way it can be done is to develop skills for adaptation, so that you can change from one job to the other. In fact, it has been said that most people in this century will be changing jobs more than a dozen times. I've changed jobs almost 12 times. And as such, it is even more important for academicians to help equip students with the skills that will enable them to adapt and acclimatize to new situations. It's the only way. The international higher education landscape is changing. Students from China, India, and Korea have become the most mobile in the world. The number of students in higher education worldwide is expected to increase fourfold, from around 100 million in the year 2000, to an estimated 400 million in 2030, with Asia and Latin America in the lead. If there are today around 4 million internationally mobile students in the world, estimations indicate that might grow to 7 million by 2020, which is in 3 years' time. Students' expectations are changing too. In today's digital era, students want to be able to choose what they learn, how and where they learn, and when they should learn. The internationalization of higher education is no longer just about students leaving their countries to study abroad. It is a whole change in mindsets. And universities need broader strategies that go beyond mobility and cover many other types of academic cooperation, such as joint degrees, support for capacity building, joint research projects, open and distance learning programs. These are new things that are coming on now. Mauritius, as many other countries, is experiencing the phenomenon of graduate unemployment, in part due to the skills mismatch. Skills mismatch in what is being taught in higher education institutions and the requirements of the working environment. We would wish Greenwich University, Mauritius campus, Pakistan Mauritius campus, to participate in the process where courses offered will serve the purpose of alleviating unemployment. Of importance is also the inculcation of practical entrepreneurship skills that will enable students to set up once they graduate, so that they're able to stand on their own feet and not be dependent on others. And in fact, there are a number of local bodies in Mauritius that will be able to provide assistance in this domain should this branch campus so wish. Talking about entrepreneurship, this branch campus here itself is an example of entrepreneurship. And congratulations to the home university for taking the step, for taking the risk. Because entrepreneurship is also about taking risks, but if you don't take risks, you don't move. The Tertiary Education Commission
already has updated its list of indicative priority fields of study, which indicates and gives an indication to students and parents about the courses to pursue for higher education studies based on the demands of industry and the labor market. Greenwich University, Pakistan, we know, is going along with the industry needs in the context of its orientation launching. This is an opportunity to orientate students to courses where there will be demand in the market. We are not all prophets, but we can have an indication of what are the main areas that are developing and are coming up in this world, whether Mauritius or elsewhere. Young people keen on learning are the future of our society, of any society. They need support, they need space to think, they need an appropriate learning environment, which I'm sure that this branch campus is going to provide. They should be empowered to take their learning in their own hands in order to shape their future and to be able to contribute to the development of society. There are so many ills in society. And in fact, you will find that most of the ills in society come from areas where there is very poor or no education whatsoever. Education brings development. Without development, this will lead to fanaticism and extremism of all kinds. So while you are here, remember, it's not only your own education that we are concerned with, it's the future of our societies. Right. So while it is understood that the Greenwich University, Pakistan, Mauritius branch campus will cater for all these aspects about the learning environment, about the resources, about the teachers, the faculty, etc., I would like to address the few students who are here directly. You are invariably responsible for your own development, for your own success. To be really global students on a global playing field, you have to read widely, okay? Improve your general knowledge. Rub shoulders with those from elsewhere. Do not build silos. Develop attitudes and soft skills that will make you tolerant, respectful of the idiosyncrasies and cultures of others, and helpful of those less privileged than you are. There is godliness in all of us, and together we can strive for a better world. Okay? But being here with you this evening makes me feel I wish I was maybe 20 years younger, when it was at a time of, not 20 years, maybe 45 years younger, when we're full of hopes, full of plans, when we are at the time of making so many mistakes, but that's all part of life. Okay? So I wish you courage in all that. Having said that, I wish this institution here, Greenwich University, Pakistan, Mauritius branch campus, and its students, plenty of success in its endeavors. Just to close, our Master of Ceremonies here, and myself, we were both teachers at Lebocage International School. That was in a previous lifetime. Okay, and I'm so happy to be seeing you here again today. Thank you very much. Yes, pioneers setting up in private colleges for Mauritius some time back. Thank you very much for your words of wisdom to the students, your encouragement to the staff, the faculty, and of course to the understanding that by encouraging universities to set up campuses in Mauritius, we're encouraging not just Mauritius, but the region to come and join us. As you saw this evening, 8 different nationalities under one roof, all studying together, which is, again, a wonderful achievement in such a short space of time. I would now like to call on stage Mr. Rab Nawaz, who is the Manager for Academics, to come and share with us his vote of thanks.
members of the Diplomatic Corps, Director, Tertiary Education and Scientific Research, Minister of Education, parents and families of students watching us live through our website, distinguished guests, friends of Greenwich University, faculty and students, all protocol observed. On behalf of the Chancellor, the Registrar and the entire Greenwich family, we would like to thank you all for your gracious presence at the orientation launching ceremony of Greenwich University Pakistan Mauritius branch campus. Our special thanks to the Ministry of Education, Government of Mauritius, members of the Diplomatic Corps. Your presence is a source of motivation not for all of us, but for the student body especially. Respectable parents, we are very much thankful to you for your trust to send your kids here for the higher studies. We are very thankful for the Friends of Pakistan, Muslim Ladies Council, Dr. Sarir Ara, Mr. Ubaidullah for their continuous support and cooperation and sponsoring and mentoring the students from Madagascar, Comoros and Mauritius. Isaac Mauritius, thank you so much. Students ushered from Greenwich University Resource Center and Focus for their technical support. At the end, our sincere appreciation to the staff of Greenwich University main campus and the staff of Greenwich University Mauritius branch campus for their untiring efforts to make this dream come true. I'd like to call upon stage Dr. Sher Sultan Mughal, Ms. Georgina Ragavan. Please come on the stage. Please have a big round of applause for all the staff members for their untiring effort. Ms. Grisha Dhunno, she is not here because of the operation. Ms. Janita Bodho, Ms. Anjali Moti, Mr. Kaisar Shehzad, Mr. Dharam Das, Ms. Ankita, Mr. Kavi, Ms. Rashmi. Please have a big round of applause for all of them. We all are once again very much thankful to you. Ladies and gentlemen, the dinner is ready downstairs. The ushers will lead you to the dinner area. Have a very nice evening ahead. Merci beaucoup.
कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, सही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजील लियाकत है और आप देख रहे हैं लाइव कॉर्ड विद सजील लियाकत। जी हाँ, इस शो के अंदर हम लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं म्यूजिक के हवाले से, इंस्ट्रूमेंटल कैसे प्ले होता है और आप गाना किस तरीके से गा सकते हैं, कौन सा राग किस टाइम सूट करता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देर किस बात की, अभी लाइक करें ग्रीनविच वेब टीवी को, ग्रीनविच यूट्यूब चैनल को और ग्रीनविच फेसबुक को। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनविच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर सिंध को खुशामदीद कहा। तलबा व तालिबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालिबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। Hello and welcome. You're watching Greenwich TV and right now you're watching Greenwich on the Move, जहां हम जगह जगह पे जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। तो आज देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है। तो हम मौजूद हैं कराची के साहिल समुंदर पे, जहां पे लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं और यहाँ पे कुछ नौजवान मौजूद हैं जो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, सेल्फीज खींच रहे हैं, टिकटॉक्स बना रहे हैं। तो आके इनसे बात करते हैं। आज क्या करने हैं आप लोग सारे दोस्त हैं? हम यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं क्योंकि पेपर्स हमारे खत्म हुए हैं, तो हमने सोचा थोड़ी एंजॉयमेंट भी होनी चाहिए। पेपर की स्ट्रेस थी, बहुत पेपर दिए थे। कौन सी क्लास में? हम मैट्रिक में। अच्छा, तो मैट्रिक के अब एग्जाम हो चुके हैं और अब रिजल्ट का इंतजार है? जी बिल्कुल। तो रिजल्ट से पहले पार्टी हो जाए, क्योंकि हो सकता है शायद रिजल्ट के बाद पार्टी रह जाए। घर वाले पार्टी देंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। और देखते हैं हमारे साथ और मौजूद हैं। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम मसर खान है, मैं इन्हीं की क्लास में हूँ। लोग इसी जैसे मेरे दोस्त ने आपको कह दिया कि हमारे पेपर खत्म हो गए, बहुत स्ट्रेस से पढ़ाई का, इसलिए हम घूमने आ गए। तो मजा आ रहा है? मजा तो अभी हम आए, अभी हमारा एंट्री हुई है और हमें अच्छा, तो ये देखें आपस में सारे ये लोग एक क्लासमेट्स हैं और कितना साथ इनमें मजा मस्ती है, वो सब हम आज देखेंगे। तो इंग्लिश गाना आप हमें सुनाने वाले हैं। सोच रहे हैं हमारे भाई के कौन सा इंग्लिश गाना। कोई टेंशन नहीं है, मैं भी साथ गाऊंगा। You were the shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away, a flatter side of aim of light, wanna see us alight, where are you now? Thank you so much. Alright, that was faded by Alan Walker। और सवाल ये उठता है कि ये where are you now कह किसको रहे हैं भाई? कोई है ज़हन में तो बता दो। अभी तक तो कुछ नहीं है। चलो जी, मैट्रिक में आगे बढ़ेंगे, हो सकता है ज़हन में कोई आ जाए। और हमारे साथ कौन भाई है? ये भाई तो पीछे हट गए। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप ये बताएं, सारे दोस्त वगैरह आए हुए, तो किस तरह से आए हो? बाइकों पे आए। बाइकों पे आए। अच्छा, तो फुल एंटरटेनमेंट सारे। अभी हम लोग गार्डन गए थे, गार्डन से अभी फिर यहाँ आए। हम लोगों का था नहीं यहाँ का आने का, एकदम से बन गया। हमसे मिलना लिखा था। हाँ भाई, यही समझ ले, आपसे मिलना लगा। तो कोई सीटी बजा के हमें दिखाओ। चलें, जितना भी कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो राइट गाइस, आपने देखा हमारे साथ एक स्कूल के मैट्रिक के स्टूडेंट्स थे जो कि अपने एग्जाम्स के ख़त्म होने की खुशी में यहाँ सेलिब्रेट करने आए हुए थे और उन्होंने हमसे बात की, गाने भी सुनाए, सीटियाँ भी बजाई। एंड लेट्स सी हु एल्स वी हैव ओवर हियर। कराची की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिलते हैं और हर इंसान एक से एक इंटरेस्टिंग होता है। और इसी तरह से मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर यहाँ पे देखा है और उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम क्या है? नवीद। नवीद भाई, समुद्र का आपने रुक किया, फैमिली के साथ इधर आए हुए, ऐसे ही घूमने फिरने या कोई खास? एक्चुअली वी आर विजिटिंग फ्रॉम लाहौर।
ऑलराइट, जिंदा दिलाने लाहौर, तो इनसे तो खूब गप लगेगी। और So it's so beautiful, nice, warm water, and weather is so pleasant. We are enjoying a lot. We had a horse ride, which was so nice, and in general, it was really nice, good. So comparatively to Lahore, you don't have the sea over there, you don't have the beach over here. So when you come to Karachi and you visit Karachi, how does it feel to visit the beach? The beach is beautiful. The only thing we don't have in Lahore, in Punjab, is a beach. It's just ocean. Ocean makes the Karachi really different than Punjab. But we have the a river over there, but it's not big like ocean over here. तो कुछ पंजाबी वेज गल भी कर लें। Why not? I mean, it's hard for me, but let's try again. Okay. तो कोई गाना सुना दे हमें। I don't sing in Punjabi. I do not know how to sing in Punjabi. English में सुना दे। No, I cannot sing even in English. And here is my daughter. Come on, my daughter. और यहाँ हमारे लाहौर से। She's visiting me from abroad. She's visiting me from USA. Oh wow! So we've got a little angel from USA. We'll talk to her. Hello, how are you? Good. So is this your first time in Pakistan? Yes. How do you like it here? Good. I like it. So did you enjoy on the beach? Yes. Did you take a horse ride? Yes. Can you tell us some poem? Sing some poem, Ravi. How was the horse ride? Good. Good. You like Pakistan? Is Pakistan beautiful? Yes. Do you want to come back here again? Or is it good, better than USA, or Pakistan is good? Pakistan is good. All right. राइट तो आपने देखा हमारे पास यहाँ यूएसए से भी एक छोटी सी नन्ही सी परी आई हुई थी एंड वी हैड विजिटर्स फ्रॉम लाहौर और वो कितना पाकिस्तान के लिए कराची के लिए अच्छा सोचते हैं दैट इज द थिंग देखते हैं हमारे साथ यहाँ और कौन कौन मौजूद है कराची के अंदर जब आप समंदर पे आते हैं तो आपको वहाँ पे घोड़े ऊंट सांप बहुत सी चीज़ दिखती हैं एंटरटेनमेंट के लिए और हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं जो कि सांप के एक्सपर्ट हैं और इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका भाई? सलाम, इकबाल हमारा नाम है सही बादशाह, हम सांप वाले फकीर। इकबाल भाई कितने अरसे से आप सांप के जो है चीज़ें देख रहे हैं? गुजर गया हमारा ये जिंदगी तलक हम सांप ही पकड़ते हैं और काम नहीं है हमारा। सांप पकड़ना, गिदड़ सिंगी निकालना, हाथ जोड़ी निकालना, ये हमारा काम है। मनके वाले भी सांप पकड़ते हैं और बीन बजाने वाले भी सांप पकड़ते हैं। अभी थोड़ा बीन सुनाऊं फिर? चले जी, हमें बीन सुनाएंगे। क्या बात है। देखिए कोई म्यूजिक की आर्ट की लैंग्वेज नहीं होती और जिस खूबसूरती से भाई ने बीन बजाया अब इनसे हम इनकी रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे और भाई हिंदी में इनसे अब आप सवाल करें। इधर आए मेरे पास बोलो क्या यहाँ पे आते हैं क्या होता है मतलब छा हुंदो छा न हुंदो इहो मतलब रोज़ी 300-400 रुपया थिए थी, वधीक कोन, कॾहिं 200, कॾहिं 300, कॾहिं 100, कॾहिं 400 में मतलब तव्हांखे कीअं लॻे थो एंजॉय कयो था तव्हां? वीआईपी आहे, मौसम भलो आहे घुमण जे लाइ, माना कराची शहर भलो आहे हा न। आऊं नवकोट शहर मिठी ज़िलो। एक चीज आपने देखी भाई कि जितना टाइम हमसे हमारे भाई ने बात की इनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी और ये मुस्कुराहट है हमारी शहर की खूबसूरती के। यहाँ पे हर इंसान मुस्कुराता है, हर इंसान अपने रोजमर्रा की मुश्किलात के बावजूद खुश है, जिंदगी से लड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ कराची। Hello and welcome, assalamu alaikum. You're watching Lighter Note with me उमर खान और इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं हर दफ़ा एक बहुत ही ख़ास मेहमान से और आज की जो हमारे ख़ास शख्सियत है बहुत ही ब्लेस्ड टैलेंटेड आवाज़, क्या कमाल के सिंगर हैं क्योंकि जब वो गाना शुरू करते हैं तो मैं तो पर्सनली किसी और ही जोन में चला जाता हूँ। और प्रीवियसली आपने ग्रीनिच लाइव सेशंस में हमारा फॉर्मेट कुछ और देखा था। लाइटर नोट में आप एक डिफरेंट अंदाज में हमें और हमारे गेस्ट को देखेंगे क्योंकि लाइव सेशंस के बाद लाइटर नोट में
हम अपने गेस्ट के घर जाएंगे और इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने गेस्ट के घर में और अब उनका मैं तारुफ कराना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं नसीम खान। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने घर पे दावत दी और ये हमारा लाइटर नोट शो है तो सबसे पहले तो मैं रिलैक्स होकर बैठ जाऊँ, घर पे बैठे हैं तो थोड़ा सा तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने दावत दी और अपना कीमती वक्त दिया कि हम आपके घर पे आ सकें और आपका जो हुनर है वो सबके साथ शेयर कर सकें। ब्रदर, ये आपका ही बड़प्पन है जो आप मेरे घर आए। थैंक यू सो मच। बस ये है कि कुछ थोड़ा बहुत, इतना नहीं, थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं तो इंशाल्लाह वो कोशिश है आपके लिए पेश करेंगे। जी, ये ज़्यादा हम्बल हो रहे हैं इस वक्त। मैं आपको बताऊं कि आप अगर गूगल पे या यूट्यूब पे जाके नसीम खान सर्च करेंगे और जो आपके सामने इनका टैलेंट आएगा, जो इनकी सिंगिंग की कैपेबिलिटीज़ आएंगी, आप खुद एक अलग जोन में चले जाएंगे और वो टीज़र हम आपको दिखाएंगे ज़रूर और शो के एंड में। लेकिन उससे पहले आज हम नसीम खान की लाइफ जर्नी शेयर करेंगे कि कहाँ से उन्होंने गाना शुरू किया, क्या उनकी पूरी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो रहे, यहाँ तक कि वो इंटरनेशनली दुबई में रहे 7 साल, वहाँ उन्होंने गाए और बेतहाशा बड़े नामों के साथ उन्होंने परफॉर्म किया है, जिसमें सज्जाद अली हैं, शफ़क़त अमानत अली ख़ान हैं और बेतहाशा उनकी अचीवमेंट्स रही हैं ऑन स्टेज वाइल सिंगिंग, जिस पे हम बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा नसीम भाई, ये बताइएगा कि ये जो आपकी जर्नी है ये कहाँ से स्टार्ट हुई? क्या बचपन से शौक़ था या फैमिली में चला आ रहा है, ब्लड में चला आ रहा है, घराना है आपका पूरा सिंगिंग से रिलेटेड? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। हमारा जो है घराना ही है अल्लाह की रहमत से। बाकी मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था, मैं एक साल का था उस वक्त। तो मेरे जो वालिद साहब हैं माशाल्लाह एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, क्लासिकल गाते हैं, गज़ल गाते हैं, गीत गाते हैं, सब कुछ गाते हैं माशाल्लाह। तो मेरे वालिद साहब जो हैं, जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो उसके बाद जो है हमारी तरफ जो है तवज्जो हो गई थी उनकी। तो इस फील्ड से थोड़ा सा, मीडिया से जो है ना, वो थोड़ा सा उन्होंने ब्रेक ले लिया था। बाकी उन्होंने ही मुझे तैयार किया है बचपन से, तकरीबन 5 से 6 साल की उम्र से है मैंने तालीम लेना शुरू कर दिया था। जब थोड़ा बहुत मुझे अब्बू को देख के मैं गुनगुना लेता था तो अब्बू ने मुझे इस काम पर लगा दिया था। अब जब आप बात भी करते हैं ना तो आपकी बात की आवाज़ की टोन भी इतनी सुर में होती है कि पता चलता है जी ये सिंगर बात कर रहा है। मुझे ये बताइएगा कि जब आपने इतनी यंग एज से आपकी तालीम शुरू हुई तो वो कौन सा टाइम था, पहला टाइम जब आपने किसी स्टेज पे परफॉर्म किया हो या सबके सामने परफॉर्म किया हो, जहां आपको खुद भी ये फील हुआ हो कि यार ये चीज़ मैं बहुत अच्छी कर सकता हूँ और इस फील्ड में मैं बहुत आगे जा सकता हूँ? कंपटीशन पाकिस्तान में बहुत होते थे, लेकिन मेरे वालिद साहब ने मुझे मना किया हुआ था कि बेटा अभी आप तैयार नहीं हो, जब आप काबिल हो जाओगे तो उस वक़्त मैं आपको इजाज़त दूंगा। क्या बात। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बिल्कुल रोका हुआ था। तो इस वजह से मैंने कोई भी कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। एक बस यही है कि अब्बू ने जब इजाज़त दी मुझे तो मैं दुबई चला गया था। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत सेटअप देखा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना टैलेंट को प्रमोशन बहुत कम मिलती है। तो मुझे दुबई में एक मौका मिला, तो वहाँ पर फिर अल्लाह की रहमत से मेरा इंटरव्यू हुआ और वहाँ इंटरव्यू होने के बाद मुझे एक जॉब का जो है सिलसिला बन गया था मेरा। तो जॉब जो है फैमिली रेस्टोरेंट में जो है मुझे मिली थी, तो मैंने वो एक्सेप्ट की। बाकी ऑफ़र्स भी मुझे बहुत आई थी। लंदन से मुझे ऑफ़र आई, बहरीन से मुझे ऑफ़र आई, मस्कत से, मलेशिया से, यानी मुझे बहुत सी ऑफ़र्स जो हैं आती रहती थी। अपने लाहौर से भी मुझे ऑफ़र आई थी। तो मेरा जो है, मैंने जो वहाँ पर वर्क किया तो यकीन करें ऑफ़र्स तो बहुत आई, बहुत ही बड़ी बड़ी ऑफ़र आई, लेकिन मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप जो हैं मैं आपकी ऑफ़र जो है एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने यही कहा कि यहाँ से जो है मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा फिर मैं आपके पास आऊँगा इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है अगर हमारा राब्ता रहा तो।
तो वहाँ पर फिल्म में भी मुझे मौका मिला। इंडिया का मुझे मौका मिला था जबकि ये एक कंपटीशन चल रहा था जिसमें नबील शौकत ये भी थे वहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे मौका मिला तो मैं उस कंपटीशन में जा नहीं सका। मेरा दुबई में 7 साल से आना जाना है और वहाँ पर मैं छोटी सी जॉब करता हूँ, ठीक है, यानी मीडिया फील्ड में नहीं हूँ। मीडिया में तो अब आया हूँ मैं बोल टीवी के ज़रिए, जो कि पाकिस्तान स्टार एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था मेरे लिए, जो कि माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से मेरा ऑडिशन जो है तकरीबन 3 से 4 दिन में 15 लाख व्यूज़ थे उस ऑडिशन के, माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। बाकी उसके बाद जो है अल्लाह की रहमत होती रही मुझ पर। जी बिल्कुल। और जिस ऑडिशन का इन्होंने जिक्र किया वो ऑडिशन ही अगर आप सिर्फ देखें जाके, जैसे मैंने बोला कि आप सिर्फ यूट्यूब पे जाके सर्च करें नसीम खान, तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या खूबसूरत तोहफ़ा खुदा ने इनको दिया है इनकी आवाज़ के ज़रिए से। और जब ये शुरू होते हैं और जो इनकी रेंज है वो क्या कमाल रेंज है कि अगर हमें अपने लाइटर नोट, सिंस प्रोग्राम का नाम है, कि अगर उस रेंज की ऊंचाई पे मैं पहुंच के गिर जाऊं तो बचने का कोई चांस नहीं है, वो रेंज है नसीम खान की, और वो आपको हम आगे जाके सुनाएंगे भी। सर, आपकी जो एक जॉनरा है स्पेसिफिक जहां आप गाते हैं, वो क्लासिकल है, सूफ़ी है। तो आजकल के हम दौर में देखते हैं कि बहुत ट्रेंड्स चेंज हुए हैं। ऑफ कोर्स क्लासिकल ट्रेडिशनल कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन कभी ये सोचा कि यार मैं भी जो है वो आजकल के दौर के हिसाब से गाऊं, या क्लासिकल या सूफ़ी ही आप समझते हैं कि आपके लिए बेहतर है? देखें, आजकल के दौर के हिसाब से ही मैं गा रहा हूँ, माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से ऑलराउंडर गा रहा हूँ मैं। और अगर महफ़िल पे बात होती है, महफ़िल जैसी मिल जाए उस हिसाब से मैं परफॉर्म करता हूँ। और माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से फ़र्स्ट तो मैं क्लासिकल गाता हूँ, उसके बाद जो है गज़ल, गीत, सूफ़ी जो है वो मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहा हूँ इस वक्त। ये तो आजकल की दौर का है। और पॉप रॉक गीत सभी करता हूँ माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। ग्रोइंग अप, बड़े होते हुए आपके सबसे फेवरेट आर्टिस्ट, सिंगर कौन थे? मैं बचपन से जो मेरे फेवरेट रहे हैं ना, वो ग़ुलाम अली साहब रहे हैं, और जो कि गज़ल गायक है माशाल्लाह, बहुत ही मुझे मेरे फेवरेट हैं। और मेरा जॉनरा भी जो है उनके साथ टच होता है। और मेहंदी हसन खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, सलामत अली खान साहब, ये जो हैं मेरे फेवरेट रहे हैं, फ़तेह अली खान साहब। जी, जितने आपने नाम लिए, ऑफ कोर्स हम प्राउडली कह सकते हैं कि ये सब हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, हमारे वो पाकिस्तानी असासे हैं जिनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। जो शफ़क़त साहब कर गए, अमानत अली साहब कर गए, जो नुसरत फ़तेह अली खान साहब कर गए, जो ग़ुलाम अली कर गए हैं, और जो मेहदी हसन साहब कर गए हैं, वो काम आई थिंक कोई कितनी कोशिश कर ले उस लेवल पे पहुंच नहीं सकते। और दैट्स द प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान एज वेल। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप सिंगर ना होते तो क्या होते, और आपके क्या शौक हैं? बस मुझे बचपन से जो है मेरे वालिद साहब से यही तालीम मिली है। अगर और मैं कुछ करता तो वो मेरे वालिद साहब ही डिसाइड करते, क्योंकि मुझे तो इतना इल्म नहीं था। बस बचपन से सिंगिंग ही मैं देखता आया हूँ, और प्रोफेशनल सिर्फ सिंगिंग ही कर रहा हूँ मैं, और कोई काम नहीं। ये देखें, ये होती है डेडिकेशन, ये होता है पैशन, कि ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि अपनी ज़िंदगी में सिंगिंग के अलावा कुछ और कर भी सकते थे, सोच नहीं सकते। तो ये पैशन हमें चाहिए अपनी ज़िंदगी में, कि अपनी फील्ड से ऐसा इश्क करो कि दूसरी फील्ड की तरफ ना निगाह करो, ना सोचो कि यार मैं ये भी कर लूँ। और ये जब आप डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ एक फील्ड में रहते हैं तो सक्सेस आपको मिलती है। और वो सक्सेस का रिजल्ट क्या है, वो जब एंड में नसीम भाई हमारे लिए गाएंगे, गुनगुनाएंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा। तो नसीम भाई, मुझे ये बताएं कि आप दुबई में रहे, आप जैसे मैंने जिक्र किया, साजाद अली साहब के साथ आपने परफॉर्म किया, शफ़क़त अमानत अली के साथ आपने परफॉर्म किया, उनसे मुलाकातें रहीं। कैसा एक्सपीरियंस रहा कि इतने बड़े लेजेंड्स हैं, इतने बड़े नाम हैं, इनके साथ गाना, स्टेज शेयर करना, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सज्जाद भाई के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, उनके साथ परफॉर्म नहीं हुआ था। बाकी शफ़क़त अमानत अली खान हैं जो, उनसे मैंने उनकी ओपनिंग
और उनका वेलकम, पहले तो वेलकम किया था, फिर उनकी ओपनिंग की थी मैंने, क्योंकि मुझे मौका मिला, मैं वहाँ पर गया हुआ था जॉब के लिए, तो मेरी जगह किसी को मिल गई थी, तो मैं तो परेशान था वहाँ पर। फिर वहाँ पर मुझे मौका मिला कि वेलकम और ओपनिंग का, शाजिया जी हैं दुबई में, बहुत अच्छी जी बिग से उनका ताल्लुक़ है माशाल्लाह, बहुत अच्छा उनका एफएम है। तो उन्होंने जो है मुझे ये मौका दिया, तो मैंने उनकी ओपनिंग और उनका वेलकम कर लिया था। फैसल कपाड़िया साहब जो हैं, तो वही मुझे मिला। फिर मुझे माशाल्लाह कुछ पेमेंट मिल गई थी अच्छी खासी, मैंने थोड़ा सा खुश हो गया, क्योंकि मैं बहुत खर्च करके गया था यहाँ से। फिर वहाँ पर 1 महीने तकरीबन मैं रहा था, तो उसी टाइम पे सज्जाद भाई से भी मुलाकात हुई थी। सज्जाद भाई, मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा था, इब्ने बतूता जो है मॉल, वहाँ पर मेरे स्टूडेंट हैं, तो उनको तालीम देता था मैं पहले। तो फिर मैं अपने बॉस से ही मिलने गया था, अभिषेक माथुर जो हैं, उन्होंने ही मुझे दुबई में एडजस्ट करवाया है, यानी कि जो भी मेरी जॉब का सिलसिला, इंटरव्यूज़, एक ही इंटरव्यू हुआ था, बाकी उसके बाद जॉब का मसला हल हो गया था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ी सी तैयारी की जाए, उसके बाद आगे का जो नसीब में होगा वो देखा जाएगा। राइट और देखा आपने नसीम भाई अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें एक इतनी बड़ी हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि लाइफ का दूसरा नाम है स्ट्रगल। हम देखते हैं कि लाइफ में जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, जब वो किसी मुकाम पर आ जाते हैं, तो हम सिर्फ चमक देखते हैं, हम सिर्फ उनका फेम देखते हैं, हम सिर्फ उनका सक्सेस देखते हैं, लेकिन उस सक्सेस फेम के पीछे एक स्ट्रगल होती है, एक रियल साइड ऑफ द स्टोरी होती है, जो मैं आप एक एक कॉमन आदमी उससे रिलेट कर सकता है। कि मैं भी अगर अपनी बात करूं तो स्टूडेंट लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ के बीच का जो मेरा सफ़र था, वो बहुत कठिन था, वो बहुत ही ज़्यादा, एक कहते हैं ना कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो वही बात आप सबके साथ भी यहाँ हम इस प्रोग्राम के थ्रू और आज हमारे गेस्ट की लाइफ जर्नी के थ्रू शेयर करेंगे कि सक्सेस कम्स विथ टाइम, एंड फॉर दैट यू हैव टू स्टिक ऑन द पाथ। आपको लगे रहना है, मुश्किल वक्त आएगा, घबराना नहीं है, चलते जाना है और अपने टैलेंट पे भरोसा करना है। और अब विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं जितनी तारीफ कर रहा हूँ और जितना मैंने बिल्डअप किया है, तो अब मजीद आप लोगों को इंतज़ार नहीं कराते और नसीम भाई की खूबसूरत आवाज़ आपको सुनाते हैं। क्लासिकल और सूफ़ी के अंदर इनकी महारत है, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नसीम भाई अगर आप हमें कुछ क्लासिक में, कुछ सूफ़ी में, कुछ एक हमारे व्यूअर्स के लिए मेडले सा सुना सकें। मैं एक सहरा आपको पहले सुना रहा हूँ, जो कि सज्जाद भाई का है। माशाल्लाह, देखें अल्लाह की रहमत उनके ऊपर माशाल्लाह बहुत बड़ी, और हमारे बड़े भाई की तरह हैं, उस्तादों की भी जगह हैं। तो उनका एक सहरा है रंग लगा, तो उसमें थोड़ी सी मैंने जिद्दोजहद की है, वो मैं आप सबके लिए पेश कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह कुछ और। पीरे मनावा में निजामुद्दीन औलिया वे पीरे मनावा में निजामुद्दीन औलिया वे कैसर लाया तेरा मामा थारे बनड़े को सेरावाल बनड़े को वो
रंग लगा रंग लगा ओ रंग लगा निरे ग म ध प द म प म ग म रे ग म ग रे ग रे नि रे नि नि ध नि रे ग म ग रे सा नि रे ग म ध प द म प ग म प नि ध प द म प ग ग म प नि रे ग रे म ग रे ग रे नि रे नि ध नि रे ध नि ध प द म प ग ग म प नि रे नि ध प द म प ग म रे ग रे सा ओ रंग लगा हा ओ रंग लगा आ ओ रंग लगा निरे ग म द प द म प ग म प नि ध प द म प ग ग म प नि रे ग रे ध रे नि नि ध रे ग रे ध रे नि नि ध ध नि रे ध नि ध प द म प ग ग म प नि ध नि ध प द म प ग म रे ग रे ध रे नि नि ध ध नि रे सा ध ध नि रे सा ध ध नि रे सा ध नि रे सा ध ध नि रे सा ध ध नि ध नि रे सा ध ध नि रे सा ध ध ना ना क्या बात है। अगर आप लोग थोड़ा सा मैं हिलाना चाहूंगा, होश में आ जाए, ये हकीकत थी, ये असली था। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, अंदर दो चार और गुर्दे लगवाए हुए हैं या एम्प लगाए हुए हैं, क्या क्या चक्कर क्या है? ये इतनी आवाज, इतनी रेंज, माशाल्लाह, क्या बात है। ये बस आप जैसे बहुत से लोग दुआ करते हैं मेरे लिए, ये बस उनकी दुआओं का असर है। और सबसे बड़ी बात जो है, मेरे वालिद साहब की मुझ पर बहुत बड़ी दुआ है कि जब उन्होंने मुझे कहा था ना कि नसीम अब आप जाओ, तो उस टाइम पे अल्लाह की रहमत से मैं बहुत तैयार था। और ये जो तैयारी है, ये सारी मेरे वालिद साहब की मेहनत है मुझ पर, और मेरा लगाव है। क्योंकि इंसान अपनी मेहनत और लगाव हो ना सिंगिंग से, इससे हार नहीं माननी पड़ती, इससे निकलना पड़ता है। तो अगर वहाँ से निकल गए तो फिर अल्लाह की रहमत हो जाती है इंसान के ऊपर। क्योंकि ये बहुत वज़न करने वाला काम है। जब इंसान 2-2 4-4 घंटे मेहनत करता है तो ये वज़न हो जाता है इंसान के, अब मैं क्या करूँ, मैं तो थक गया हूँ इससे। वहाँ से निकलना पड़ता है, तब जाके ये हासिल होता है। जी बिल्कुल। देखें, यही बात मैंने थोड़ी देर पहले भी की थी कि जब लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, उस टाइम पे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पे यकीन रखें, खुद पे भरोसा रखें, क्योंकि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। और सिंस आपने अभी जो आवाज़ सुनी नसीम भाई की, ये वो आवाज़ है जो रूह को छू जाती है। और इसी बात पे मैं नसीम भाई से दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि नसीम भाई कुछ और अगर आप हमारे व्यूअर्स को एक डिफरेंट जॉनरा में, कुछ एक डिफरेंट रेंज में सुनाना चाहें। मैं आपको एक और सॉन्ग सुना रहा हूँ जो कि माशाल्लाह इस वक्त बहुत फेमस है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो वो भी मैं जो है उसमें थोड़ा सा मैंने काम किया है, तो वो मैं आपको सुना रहा हूँ। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी। क्या बात है, ये मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से। सो लेट्स सी। तो राग दरबारी उसके अंदर है ये सॉन्ग, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। तो मैं पेश कर रहा हूँ आप सबके। सा नि सा रे सा द ध नि रे ग म रे नि ध रे सा द नि रे सा। रात यूं दिल में तेरी
भूली हुई याद आई जैसे वीरान में चुपके से करारा जाए, जैसे शहरों पे होले से चले बाद नसी, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। नी नी सा ज नी नी सा ज रे सा नी नी सा ज नी नी सा ज ग नी नी सा ज नी नी सा ज रे सा नी नी सा ज नी नी सा ज ग नी नी सा ज नी नी सा ज रे सा ज नी नी सा ज नी नी सा ज ग नी नी सा ज नी नी सा ज रे सा ज नी नी सा ज नी नी सा ज ग महाबदाली पासा दली बाबा मबली गा मरे सा। आप बैठे है बालिम पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नसीम भाई मैं तो एक अलग जोन में चला गया हूँ, मुझे वापस आने में जो है ना थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्या गजब कमाल कर दिया आपने। थैंक यू सो मच, ये आप सबका प्यार भाई। और ये जो स्केल जो है बहुत ही हाई मैंने रखा हुआ था, ओरिजिनल से भी ऊपर था। बाकी यही कोशिश करते हैं आप सबके। ये जो स्केल था, ये स्केल पहुंचना ही इम्पॉसिबल है। मतलब मैं अगर अपने अब एक मिसाल देता हूँ, आप अपने जो टेप रिकॉर्डर है उसकी वॉल्यूम जब फुल पे कर दें तो वो स्पीकर फटना शुरू हो जाते हैं, साउंड सिस्टम्स फटना शुरू हो जाते हैं। ये एक इंसान का गला है और वो जब इतने हाई जा रहे हैं, एक सेकंड के लिए भी आवाज में कोई झोल नहीं आया। ये वो टैलेंट है जो कि बहुत रेयर है और इसको हमें कदर करना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए और सराहना चाहिए। और आज आपकी जो मुलाकात हमने नसीम भाई से कराई है, मैं वापस कहूँगा जाके सर्च करें गूगल पे, यूट्यूब पे इनके नाम से और इनका टैलेंट मज़ीद देखें। जो जिस बोल के शो का इन्होंने जिक्र किया उसमें ये इनकी क्या परफॉर्मेंस रही और कितने बड़े बड़े नाम इनकी आवाज़ सुन के वैसे ही गुम हो गए जैसे अभी आप लोग गुम हो गए, जैसे मैं इनका गाते हुए गुम हो गया था। तो नसीम भाई, जाने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा कि जितने हमारे यंगस्टर्स हैं, जितने नौजवान हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन ऐसे ही डिसहार्ट हो जाते हैं कि जी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, स्ट्रगलिंग बहुत है, उन सब बच्चों को, नौजवान नस्ल को क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो देखें मेहनत कर रहा है ना, वो मेहनत करे। देखें अल्लाह ने कोई ना कोई तो ज़रिया बनाया हुआ होता है, ठीक है। तो बस इंशाल्लाह सबके लिए बेहतर होगा, मेहनत करते रहें और उस अच्छे उस्तादों से सीखें ताकि आपको कुछ मज़ीद पता चले कि इसके अंदर आखिर है क्या। अब देखें ये जो मैंने अभी जो स्केल, जिस स्केल से मैंने गाया है वो स्केल में कॉन्सर्ट में यूज़ करता हूँ क्योंकि माइक का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन लाइव है ये, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है। तो जितना भी हो सके खाना पीना अच्छा करें, अच्छा करके और उसके बाद जो है अपनी मेहनत को जारी रखें, अच्छे उस्ताद से सीखें। इंशाल्लाह कोई ना कोई आपके लिए अल्लाह ने मंजिल एक रखी हुई है, सोची हुई है, वो ज़रूर मिलेगी आपको, हारे ना बस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे मैं जानना चाहूँगा हमारे इस प्रोग्राम पे आज आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे उमर भाई। बहुत प्यार मिला आपसे भी भाईजान। और सजील भाई जो हैं उन्होंने मुझे याद किया है यहाँ पर, मेरे बोल टीवी में मेरी मुलाकात हुई थी इनसे। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे इंसान हैं जो कि ख़ुद सिंगर हैं और इन्होंने मुझे याद किया। ये किस लिए याद किया? ये इनकी मोहब्बत है और टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। आप जैसे भाई उमर भाई एंड सजील भाई, उन्होंने मुझे याद किया है। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, खुश रखे। बहुत ही आला शख्सियत के मालिक है माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत से।
जी बिल्कुल, ये इनकी हम्बलनेस है और इंशाल्लाह आपको ज़रूर हम फिर तकलीफ़ देंगे और चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडेंट्स के सामने आके उनको एक लाइव लेक्चर दें, वो आपकी जर्नी से आपकी इंस्पिरेशन एज एन इंस्पिरेशन आपसे सीखें, क्योंकि जो आपकी स्टोरी है और जो आपकी जर्नी है वो इतनी इंस्पिरेशनल है कि उससे मैं सीखा हूँ। आई एम श्योर कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, और स्पेशली जब नसीम भाई गाना शुरू हुए होंगे तो आप लोग सब गुम से गए होंगे। तो नसीम भाई, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपको आपके फ्यूचर में जितने आपके इरादे हैं, जो जो आपकी मंजिलें हैं, अल्लाह उन सब में आपको कामयाब करे। और आपको सिर्फ वंस अगेन थैंक यू कहना चाहेंगे कि आपने वक्त निकाला और इस प्रोग्राम में आप आए। कोई ऐसी बात नहीं है, ये आपकी मोहब्बत है भाई। आप तो हमें कभी भी याद करेंगे इंशाल्लाह। आपके एक फ़ोन पर ही हम आ जाएंगे, हम नखरे नहीं करते। थैंक यू सो मच। क्या बात है। राइट, सो गाइज, आपने आज हमारे गेस्ट से मुलाकात की और आज के हमारे गेस्ट थे नसीम खान, जो कि मैं सिंगर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि इनकी आवाज़ और जो इनका टैलेंट है वो एक लफ्ज़ में बयान हो नहीं सकता। तो आज के हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान थे नसीम खान, और आपने बिल्कुल उनका टैलेंट देखा, उनकी जर्नी देखी, उनकी सादगी देखी, और ये थे हमारे आज के गेस्ट। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इन अनदर एपिसोड विद अनदर गेस्ट। टिल नेक्स्ट टाइम, अपना ख़ास ख्याल रखें। फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको हमारा ये नया फॉर्मेट, नया शो कैसा लगा, और नेक्स्ट टाइम आएंगे विद अनदर गेस्ट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रोहेल इंतखाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाम बाखैर। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो दिन है वो अच्छा गुजरा होगा, और अगर आपका अच्छा दिन नहीं भी गुजरा तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम से आपकी शाम और आपकी रात बहुत अच्छी गुजरे। नाज़रीन, जिंदगी में मसाइल बहुत हैं, आपके साथ भी, हमारे साथ भी। हर किसी से पूछें कि वो आदमी परेशान ही है, और हर किसी से बात करें वो कहते हैं लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, लाइफ में सुकून नहीं है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर से भी बात करेंगे वो भी यही कहेंगे कि ज़िंदगी में जो है बिल्कुल सुकून नहीं है, और ज़िंदगी जो है बिल्कुल जो है इस वक्त एक अजीब कश्मकश का शिकार है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे, आपकी चाय को हम बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने चाय पीना स्टार्ट कर दी होगी, नहीं भी पी तो कोई बात नहीं, चाय आज बाहर से मंगवा लें। ज़रूरी नहीं है कि घर में बैठ के हर वक्त आप घर की चाय पीजिए, और आपके अतराफ़ में या कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है। सही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजील लियाकत है और आप देख रहे हैं लाइव कॉर्ड विद सजील लियाकत। जी हाँ, इस शो के अंदर हम लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, म्यूजिक के हवाले से, इंस्ट्रूमेंटल कैसे प्ले होता है और आप गाना किस तरीके से गा सकते हैं, कौन सा राग किस टाइम सूट करता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सो देर किस बात की, अभी लाइक करें ग्रीनविच वेब टीवी को, ग्रीनविच यूट्यूब चैनल को और ग्रीनविच फेसबुक को। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनविच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर सिंध को खुशामदीद कहा। तलबा तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख्यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। Transformation, adaptation and actualization is what we humans must do. इनिशियली आई वाज अज्यूमिंग कि ऑनलाइन क्लासेस रिज्यूम करना या कंटिन्यू करना पता नहीं कितना मुश्किल होगा और कैसे होगा, बट ड्यू टू हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क ऑफ टीम ग्रीनविच एंड फैकल्टी सारी चीज़ें बहुत इजीली मैनेज हो गई।
The teaching strategies that were used by the teachers were according to the students' needs, and the management was always there to help us in every way possible. As these were difficult situations and times, but the teachers made it easier for us to learn and understand. Regardless of fact I'm at university or at campus, Greenwich level up their game even in this pandemic. And online classes में कोई chaos या कोई haphazard बिल्कुल नहीं होता. I really enjoy it. I just want to thank my university's management for tackling this pandemic situation so well. Hats off Greenwich University. They made a portal for us, GEMS portal, जिस पे इन्होंने हमारे एग्जाम्स कंडक्ट किए. हमें लगा था हम चीटिंग कर लेंगे, गूगल कर लेंगे, कॉपी से देख लेंगे, नोट्स खोल लेंगे, बट इन्होंने वो चीज को इतना बेटर कर दिया था कि हम वो कर नहीं पाए. I want to appreciate the efforts of the team which led to the completion of this semester in an ongoing pandemic. Thank you to the Greenwich team. Greenwich University is providing hybrid learning facility. Students can attend the classes at their home as per their convenience, or they can attend the campus. For this purpose, if they would like to attend the campus, they can register themselves at the Greenwich Blended Learning Management System. Just log into the learning management system, go to the student secure desk, click on reserve under blended learning. See if the capacity is still available in your upcoming classes. Click on reserves. You are done. The new normal is the new norm, and we should learn to embrace it by practicing social distancing, staying 6 feet apart and avoiding close contact, and also sanitization of our hands and wearing masks. Greenwich has always put the interests of its students first, and that's why they've provided sanitizers at every social point on campus, starting with the main entrance and in the lobby. Also, the campus is disinfected every day. Technology can't substitute, human contact. I mean, we are avoiding contact, but it's better for me to actually look at a teacher while he or she is explaining something to me. Because it makes more sense that way and I can understand it better. Proud to be a part of Greenwich University. Greenwich is like a home. Thank you for everything. Thank you, Greenwich. Hello and welcome. Assalamu alaikum. You're watching another episode of Light Note with me उमर खान और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट जिनका मैं बिल्कुल तारुफ कराऊंगा, लेकिन उनकी सबसे ख़ास बात ये बताऊं, ही इज़ अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट और जब ये स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो इनका जो क्राउड है वो झूम उठता है. क्राउड एंटरटेनर हैं और कमाल के सिंगर हैं. इनका हम मज़ीद आपको तारुफ कराएंगे लेकिन ड्यूरिंग द शो. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट मी वेलकम मिस्टर अजीम खान. कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम. आप बताएं कैसे हैं उमर? ऑल गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे और लाइटर नोट का पार्ट बने. माय प्लेजर सर. तो आपकी शुरुआत हम करते हैं जर्नी के साथ. आप एक सिंगर हैं और कमाल के सिंगर हैं जो कि हमारे आज व्यूअर्स को भी पता लगेगा जब आप परफॉर्म करेंगे विद दिस गिटार अलोंग. थैंक यू वेरी मच. आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? क्योंकि सिंगिंग ऐसी चीज़ है कि शौक तो हर किसी को होता है. मैं भी बहुत गाना गाता हूँ लेकिन अकेले वो भी हेडफोन लगा के. लेकिन जब एक इंसान प्रोफेशनली गाने की तरफ आता है तो उसके बड़े चैलेंजेस होते हैं, पूरी जर्नी होती है. तो आपका ये शौक कब पैदा हुआ और आपको कब एहसास हुआ कि मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में आ सकता हूँ? एक्चुअली देखें, सिंगिंग या कोई भी आर्ट इंसान के अंदर जो है मैं समझता हूँ कि गॉड गिफ्टेड चीज़ है ये. ठीक है, बाद में इंसान उसको थोड़ा सा जो है वो पॉलिश करता है. लेकिन बस यही था कि व्हेन आई वाज
5 or 6 year old. तो एक शौक़ था और स्ट्रिंग्स बैंड आया था नया नया, उसमें जब लाल भाई जब गिटार बजा रहे थे और वो दूर गाना था तो बस उस वक्त से मुझे एक जो है ना वो यानी कि जुनून सवार था कि यार मुझे जो है वो गिटार सीखना है। दैन शौक़ था, क्रेज़ आप उसको कह लें। सो फिर आगे पीछे हाथ पाँव मार के किसी न किसी दोस्त से गिटार लिया। गिटार लेने के बाद जनाब जब आपको एक चीज़ का शौक़ होता है ना तो फिर आपके रास्ते खुलते जाते हैं खुद ब खुद, क्योंकि आप उसकी जुस्तजू में होते हैं। सो इसी तरीके से मुझे जो है वो हमारे ही एरिया में मुझे टीचर मिले, उन्होंने काफ़ी गाइडलाइन दी मुझे गिटार्स के बारे में कि इस तरीके से हो। अब मैं अपनी बात पर आऊँगा दोबारा कि जब एक चीज़ गॉड गिफ्टेड होती है ना आपके अंदर, तो वो गॉड गिफ्टेड चीज़ आती है सामने। बिल्कुल, ठीक है। तो वो चीज़ जो आई सामने, तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने कहा कि यार ऐसा लगता है कि ना तुम्हारे अंदर म्यूज़िक का सेंस ऑलरेडी है, तो तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाना है। मैंने कहा यार बस ये मुझे नहीं पता कैसे, हालांकि हमारा कोई ऐसा यानी कि फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है कि कोई मेरे वाले साहब या उनके कोई जो है वाले साहब मतलब आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, कुछ हो। बस एक चीज़ है कि बस ये मेरे अंदर आया। और तो सीखने के बाद ऐसा ऐसे जब मैंने गिटार पे थोड़ा सा अबूर हासिल कर लिया, थोड़ा सा, मैं अपने आप को मतलब अभी भी यही मानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग। सो उसके बाद 2008 में मैंने एक बैंड ज्वाइन किया। हमारा यहीं कराची का बैंड था और उसमें एज ए गिटारिस्ट मैंने वहाँ पे जो है ज्वाइन किया। बस वो हम लोग जो है वो शोज़ रात को करते थे, जो है वो जा के पार्टीज़ में, गिग्स में, इधर उधर। उसके बाद अच्छा उसमें होता ये था कि शो जब स्टार्ट होता था तो वहाँ पे आर्टिस्ट होते थे, हम आर्टिस्ट को बेसिकली मतलब प्ले करते थे। तो उस आर्टिस्ट के आने से पहले एक बैंड परफॉर्मेंस होती थी, जिसमें होता ये था कि बैंड का कोई भी मेंबर सॉन्ग गाएगा, ठीक है। तो उसमें होता ये था कि इतना सेंस भी था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जिक्र किया स्ट्रिंग्स को, आपने इनिशियली देखा, फॉलो किया। अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन इंस्पिरेशन है और कौन सा जॉनर है? क्योंकि आपकी 2015 में एल्बम भी आई लौट आवना, अभी हाल में ही आपका एक कमाल गाना जो कि हर किसी ने देखा होगा, जोगी के नाम से वीडियो भी इज देयर, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आप कौन सा जॉनरा है जिसमें आपका ज़्यादा अबूर हासिल है और वो कौन से जॉनराज हैं जो फ्यूचर में हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे? देखिए मैं जॉनरा इज़ सॉफ्ट रॉक, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं एफिलेटेड होता है पॉप म्यूज़िक। सॉफ्ट रॉक इज़ बेस्ड ऑन यू नो थोड़ा सा उसमें रोमांटिक टाइप और थोड़ा सा सॉफ्ट म्यूज़िक लाइक जैसे मेरा जो पहला एल्बम आया था उसमें मैंने अपना जो सॉन्ग, एक्चुअली मेरा सीन कुछ इस तरीके से था कि स्ट्रिंग्स यू नो स्ट्रिंग्स तो हर कोई जानता है, तो उनके जो सॉन्ग्स होते थे ना उससे बड़ा इंस्पिरेशन थी मुझे कि यार दूर, अब लाइक दूर पॉप म्यूज़िक है, ठीक है ना, तो उससे एक इंस्पिरेशन कि यार गिटार के साथ जो है ना वो एक आवाज़ अपनी मैच करके और फिर गाना गाना उसी थीम के अंदर रहते हुए, तो जो स्ट्रिंग्स की थी, लेकिन कॉपी नहीं किया उसको। ऑब्वियसली एक अपनी यानी कि फीलिंग थी अंदर, किस तरीके से एक अगर कुछ अपना मैं कभी फ्यूचर में बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा। तो ऑब्वियसली जब मैंने अपना एल्बम जो मेरा जो है वो लौट आना मेरा जब लॉन्च हुआ था, उसमें जो पहला सॉन्ग था एल्बम का वो था लौट आना। तो उसमें अगर आप जो है वो सुनेंगे उसमें लौट आना कह रहे थे अभी, अगर हम मैं किसी को लौट आना नहीं कह रहा था। कहीं देखे कहते एक सिंगर एक आर्टिस्ट का जब तक कहीं कोई दिल का दर्द ना हो तब तक वो जो है ना डेप्थ नहीं आती, तो ये लौट आना के पीछे कोई इंस्पिरेशन थी? ऐसा कुछ नहीं था, नॉट एट ऑल। उसके पीछे बस ये था कि मैं इसकी थोड़ी सी कहानी इस तरीके से आपको बताता हूँ कि लौट आना हमने इस तरीके से गाना बनाया था कि एक मेरे फ्रेंड थे बहुत अच्छे, और उनकी थोड़ी सी जो है ना वो असल में राइटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे वो, उनकी थोड़ी सी शायरी लिखी हुई थी। तो हम बैठे हुए थे, मुझे ये एडवाइस देने वाले भी वही थे कि यार अपना कुछ करके और तुम मार्केट में आओ। ठीक है यार। तो उन्होंने मुझे अपनी ये शायरी दी थी जिसमें सिर्फ स्टार्ट की लाइन थी कि तुम लौट आओ ना मेरी राहों में, मेरी बाहों में। अब इसको बनाना था। अच्छा, इधर थोड़ा सा ये मैं आपको बताना चलूँ कि कंपोजिंग भी एक अलग आर्ट है, ठीक है। यहाँ पर सिलसिला होता है आमदों का, कि आमद होती है, लाइन आती है, कोई दिमाग में वो कोई धुन बनती है, अब उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरीके से ना ये थोड़ा सा मुश्किल काम था मेरे लिए ना, लेकिन
वो होता चला आप को मैंने बताया कि वो गॉड गिफ्टेड जब चीज़ होती है और आपके अंदर जब वो यानी कि पैशन और वो जो यानी कि एक रजीपन आपके अंदर होता है ना वो, तो आप फिर नहीं सोचते कि यार ये मुश्किल है। राइट। सो ऑफ कोर्स फिर आपने कॉन्सर्ट्स किए, जगह जगह किए, इंटरनेशनली गए, दुबई में आपके कॉन्सर्ट्स रहे, ऑफ कोर्स एक फैन फॉलोइंग आती है, तो लौट आओना की इंस्पिरेशन से कोई पहले तो था नहीं, आपने जैसे बताया, तो फिर कोई लौट के आया? नहीं, लौट के फिर एक नहीं आया, बहुत सारे आ गए। सो एक इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप इस फील्ड में एज प्रोफेशनल्स आना चाहें तो पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं किया जाता, एक्सेप्टेंस नहीं होती, फैमिली की तरफ से एक प्रॉब्लम आता है कि आप क्या होगा, कैसे होगा, लोग ज़्यादा आर्ट को प्रमोट नहीं करते। आपकी जर्नी में जब आपने लेटर ऑन ये रियलाइज़ किया कि यार मैं प्रोफेशनली इस चीज़ को सीरियसली लेता हूँ, तो कोई चैलेंजेस आए, उनको कैसे ओवरकम किया? और जितने यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, क्योंकि अब रिवाइव हुआ है कुछ पाकिस्तान में, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स आया, कुछ डिफरेंट अंडरग्राउंड आ रहे हैं, डिफरेंट स्टेशंस आ रहे हैं, तो ये सारी डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। प्राउडली ग्रेनिच के भी कुछ बैंड्स थे जो उसमें जीते हैं। सो एक रिवाइवल आ रहा है, बट आपकी इस जर्नी शेयरिंग के अंदर आपका कैसा सफ़र रहा और यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे? यार ऑब्वियसली देखें, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं और बहुत सारी हर्डल्स भी आती हैं, बीच में बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। इतनी आसान फील्ड नहीं है। हम किसी आर्टिस्ट को देखते ना यार, कोई आर्टिस्ट आया, मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहूँगा, आजकल जो बड़े फेमस हुए हैं आर्टिस्ट आया, हम ये देखते हैं स्टेज पे, यार आते ही मशहूर हो गए, आते ही मशहूर। यार आप उनकी हिस्ट्री देखो पहले कि वो आप उनको पहले से तो नहीं जानते थे ना, वो आए आपके सामने सिर्फ एक स्क्रीन पर, आप उनकी हिस्ट्री नहीं जानते थे। फिर जब आप उनकी हिस्ट्री में जाते हो ना कि वो बंदा कब से स्ट्रगल कर रहा था, तो आपको पता चलता है कि यार उसने इतनी मेहनत करी है, वो अब जाके स्टेज पे आया है। तो सोने का चमचा लेके हर कोई 1000 में से एक कोई पैदा होता होगा जो आते ही जो स्टेज और पे आज के ज़माने में जो एकदम से जो लोग वायरल होते हैं वो एकदम से फेड अवे भी हो जाते हैं। तो ट्रिब्यूट टू ऑल दोज लेजेंड्स इन पाकिस्तान जो 20, 30, 40, 50 साल से आज भी हैं, और जो हमारे लेजेंड्स हमें छोड़ के जा चुके हैं वो ताहयात जिंदा रहेंगे। तो दैट्स द काइंड ऑफ पाकिस्तानी म्यूजिक वी हैव। सो सर, बहुत बातें हमने बड़ी कर ली, लोगों को अब महरूम नहीं करते मजीद, कुछ आपका आर्ट टैलेंट पोटेंशियल लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो कुछ आप हमें आज क्या सुना रहे हैं? अपनी जो अभी जो लेटेस्ट सॉन्ग आया है मेरा जोगी, उसकी चंद लाइनें में बिल्कुल देखी है, आप लाइव भी सुन लें कि किस तरह के, और अगर नहीं देखी है तो अजीम खान AK के पेज पे जाके या अजीम खान AK के चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे जाके जोगी के नाम से वीडियो है वो देखें ज़रूर, और इसको एंजॉय करें और शेयर करते रहें। जो फासला मीलों का था, बस 2 कदम में ढल गया। एक कदम हम चले, एक कदम जिंदगी, तू जो मिला हम सफर मिल गई, राहें नई, दिल पे लिखिया मैं नाम तेरा, छड़ के जावे ना तू सोनिया, मैं चाहूं संग ये तेरा जो लगा रंग, ये इश्क में तेरे यारा मैं जोगी हो गया, मैं चाहूं संग ये तेरा जो लगा रंग, ये इश्क में तेरे यारा मैं जोगी हो गया। वेल बहुत ही एक कैची और मेलोडियस इसकी बीट थी, आई एम श्योर कि ये गाना, क्योंकि मैंने खुद वैसे भी सुना है, और जिन लोगों ने नहीं सुना तो आप प्लीज़ जाके सुनिएगा, अजीम खान के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ये जोगी की वीडियो देखें, क्योंकि आपने इस गाने में ना बड़ी वेरिएशन लाए। स्टार्ट होता है एक स्लो टोन से, फिर पूरी एक स्टोरी बिल्डिंग है, आप वीडियो के साथ देखें तो ऑफकोर्स वो स्टोरी की थीम भी दिखती है। तो इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी इसके, क्योंकि आप कॉम्पोजिशन की बात कर रहे थे, तो टॉक अस थ्रू दैट। इंस्पिरेशन इज़ दैट के ऐसे ही मैंने बताया आपको कि एक आमद का सिलसिला होता है, तो वो ऐसे ही बैठा हुआ था एक जगह पर, तो बैठे बैठे एक ऐसी आया कि यार कुछ अलग टाइप का बनाता हूँ, कमर्शियल कुछ होना चाहिए,
जो ये वेडिंग्स वगैरह में भी चले और हर जगह चले। तो क्योंकि मेरे सॉन्ग जो है ना वो ज़्यादातर आप सुनेंगे तो वो सिर्फ एक वो इस तरह के हैं कि वो ड्राइविंग पे आप सुन लें, थोड़ा सा वो ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं सुन लें। लेकिन मैंने कहा यार कुछ होना चाहिए ना, हर आर्टिस्ट के पास एक ना एक यानी कि एक ऐसी वैरायटी होती है जो उसकी यानी कि थोड़ी सी कमर्शियल हो जाती है वो। मैंने कहा यार ये जो है वो करके देखते। तो ऐसी ये लाइन थोड़ी जहन में आई थी, तो मैंने कहा यार कुछ है इसमें ना जो जान है, मैंने रिकॉर्ड करके रख दिया। मैंने कहा यार फिर बाद में देखेंगे। फिर मुझे एक ऑफ़र आई, एक हमारे ही मतलब यानी कि एक मेरे दोस्त हैं, वो एक मतलब राइटर हैं, ये अभी उन्होंने वो लिखी मूवी, क्या नाम है उसका, हीर मांझा, तो उसके राइटर भी हैं, वैस कुराई बलोच है उनका नाम। तो उन्होंने मुझे एक ऑफ़र करी, कह रहे हैं यार हमारी मूवी के लिए एक सॉन्ग बना दें, कुछ कमर्शियल जो है टाइप का, जो थोड़ा सा वेडिंग टाइप और ये हो। तो मैंने सोचा यार एक दिन मैंने एक मेलोडी बनाई थी, उसी को निकाल के दोबारा से कुछ करता हूँ। तो मैंने ना वो निकाली मेलोडी और उसको और थोड़ा आगे बढ़ाया, कुछ करा। तो स्टार्टिंग की लाइन्स थोड़ी, फिर वही आमदें आती रही, थोड़ा सा बैठा जो है वो। फिर मैंने कहा कि यार एक्चुअली मैंने अपने जो मेरा पहला एल्बम आया था मैंने वो खुद लिखा था पूरा। इसको मुझे खुद मैं जो है इसको यानी कि सोच रहा था कि मैं लिखूं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये सॉन्ग बहुत अच्छा बन सकता है, इसको मैं लिखवाऊँ तो किसी अच्छे कोई यानी कि नॉन जो है वो राइटर से लिखवाऊँ ताकि थोड़ा सा नाम हो। तो मैंने SK जो है वो खलिश हमारे भाई हैं एक, और बहुत से राइटर भी हैं, आजकल OSTs भी लिख रहे हैं ड्रामों की, उनको मैंने कांटेक्ट किया। मैंने कहा यार कि खलिश भाई इस तरह के एक जो है वो मेलोडी है, उस पर कुछ मुझे थोड़ा सा अच्छा सा कोई वेडिंग टाइप जो है ना वो लिख के दें। बहरहाल वो आए मेरे पास, हम दोनों बैठे, हम तो वो दोनों की कोलैबोरेशन से वो यानी कि लिखा हमने। और ये जो लाइन है, जो इसकी जो पंच लाइन है, ये मुझे खलिश भाई ने ही लिख के दी थी। मैं चाहूँ संग ये तेरा जो लगा रंग, ये इश्क में तेरे यारा मैं जोगी हो गया। मैंने कहा यार खलिश भाई सैल्यूट है यार आपको, क्या जबरदस्त आपने कंप्लीट पैकेज बन गया। और ये जितने लोग हैं हमारे, उन्होंने जो देखा वो वाकई अगेन रिपीट किया, आप ये अगर नहीं देखा है तो गो एंड चेक आउट द वीडियो एंड डू कमेंट, क्योंकि कमाल चीज़ है, स्पेशली सच ए प्राउड मोमेंट के पाकिस्तानी म्यूजिक में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। सो एज मच एज आई एम लविंग दिस सेशन, वी आर आल्सो कमिंग टुवर्ड्स एन एंड, लेकिन जाने से पहले एक मेडले आखिरी हमारे व्यूअर्स के लिए, ऑडियंस के लिए। बिल्कुल, मेडले तो बहुत सारे हैं। एनीथिंग यू नो, जो आप जैसे मैंने शुरू में कहा कि स्टेज परफॉर्मर में क्राउड झूम जाता है, सो एनीथिंग फॉर सिंग अलोंग, जो कि हमारे ऑडियंस उस तरफ जो हमें देख रहे हैं वो साथ साथ गा सकें। बिल्कुल बिल्कुल, एक मेडले आप साथ गाएंगे मेरे? नहीं, फिर आपका गाना बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। ऑलराइट। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ख्वाब तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। देर से इतनी दूर खड़ी हो और करीब आ जा, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ओ हो दिल के देखो, दिल के देखो, दिल के देखो, दिल देने वालों दिल देना सीखो जी, तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा। उड़ जब जब जुल्फे तेरी, उड़ जब जब जुल्फे तेरी, कुंवारियों का दिल मचले, कुंवारियों का दिल मचले, जिन बेरिए शाम ढले, खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़
शोला जो भड़के दिल मेरा तड़पे, रंग जवानी का सताए बढ़ बढ़ के, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए ओ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। क्या बात है। और ये इसी नोट के ऊपर हम एंड की तरफ आएंगे कि ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ये जो हमारा आर्ट के साथ एक रिलेशन है, जो एक किसी भी यंगस्टर की लाइफ के अंदर जो एक, मैं कहता हूँ ना कि एक तरह से स्ट्रेस बस्टर है। आप पॉजिटिविटी की तरफ आए, कोई भी एक क्रिएटिव अगर आपके पास हॉबी है या हैबिट है, that keeps you away from lots of negativity, and this is something that is really good. So sir, आपका बहुत शुक्रिया that you joined us on lighter note. But last question is कि आपका आज इस प्रोग्राम पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? इट वाज रियली गुड यार, और बड़ा मज़ा आया। आप लोग आए और इधर, और आप लोगों ने आप लोगों के साथ बड़ा अच्छा टाइम, क्योंकि आज संडे है, संडे को बहुत कम ऐसा होता है कि अच्छा दिन गुजरता है, वरना तो बोरिंग जो है ना वो डे जो है गुजरता है। लेकिन आज अच्छा लगा आपसे बात करके, और थोड़ा सा कि टाइम भी पास हो गया, और एक थोड़ा सा म्यूज़िक भी जो है वो हो गया। अच्छा लगा उमर भाई, थैंक यू सो मच। नहीं बहुत अच्छा लगा आप आए यहाँ पर हमारे पास, और आपने लेकिन खिदमत करने का मौका नहीं दिया बिल्कुल हमें। नेक्स्ट टाइम खिदमत का मौका देंगे ज़रूर, एंड द प्लेजर वाज ऑल माइन, and I wish you all the best for all your future plannings and whatever you plan to do. बहुत माशाल्लाह आप टैलेंटेड हैं, और स्पेशली जो आपकी परफॉर्मेंस है वाकई मज़ा आ गया। तो गाइज बिल्कुल आपने सुना आज अजीम खान को, जो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, कमाल के सिंगर हैं, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि जब एक सिंगर लिख रहा होता है, एक उसमें आमद आती है, तो ये वो सारे लोग रिलेट कर सकते हैं जो इस फील्ड से कनेक्टेड हैं, कि कब किस तरह से क्या चीज़ जहन में आती है और वो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाती है। हर गाने के पीछे एक कहानी होती है, और एंड प्रोडक्ट जब हम देखते हैं बड़ी आसानी से उस पर कमेंट दे देते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है उसको रियलाइज करना ज़रूरी है। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस सेशन फॉर टुडे। बिल्कुल अपना फीडबैक दें ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल पे, और बिल्कुल हमें बताएं कि फ्यूचर में आप लाइटर नोट पे किन गेस्ट को देखना चाहते हैं, और अपना खास ख्याल रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग, स्टे पॉजिटिव, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का ग्रीनिच यूनिवर्सिटी कराची का दौरा। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और इंतजामिया ने डीजी रेंजर सिंध को खुशामदीद कहा। तलबा तालबात हमारा कीमती असासा और रोशन मुस्तकबिल है। नौजवान नस्ल खुद को दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करें। हमें तहम्मुल, रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ देकर माशरे से मंशियात, जराइम और इंतहा पसंदी जैसे मनफी रवैयों की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होगी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और तलबा व तालबात ने सवाल जवाब के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार भी किया और रेंजर्स की कोशिशों को भी सराहा। कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, सही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजीर लियाकत है और आप देख रहे हैं लाइव कॉर्ड विद सजीर। जी हाँ, इस शो के अंदर हम लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं म्यूजिक के हवाले से, इंस्ट्रूमेंटल कैसे प्ले होता है और आप गाना किस तरीके से गा सकते हैं, कौन सा राग किस टाइम सूट करता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहेगा। देर किस बात की, अभी लाइक करें ग्रीनविच वेब टीवी को, ग्रीनविच यूट्यूब चैनल को और ग्रीनविच फेसबुक को। स्टे ट्यून्ड विद अस।
अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रोहेल इंतखाब और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम शाम बखैर। हम उम्मीद करते हैं कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा और नहीं भी अच्छा गुजरा तो इस प्रोग्राम के थ्रू ये ख्वाहिश है कि आपकी शाम जो है वो बहुत ही खूब गुजरे। शाम बखैर। तो लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है शाम अपनी इंजॉय कर रहे होंगे और ये वीडियो देख रहे होंगे। आज वीडियो में हम आपके सामने एक और सोशल इशू उठाकर रखेंगे, लेकिन सबसे पहले अच्छी बात कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सामने रखेंगे। उनका एक अक़वाल है, बेशुमार उनके अक़वाल हैं और हमें देखने को मिलते हैं जिससे हमें हमारा जज्बा हुब्बुल वतनी उजागर भी होता है और साथ साथ हमारे अंदर एक मोटिवेशन का लेवल है वो इंक्रीज होता है। कायद-ए-आज़म ने एक जगह ये भी कहा कि इज्जत और वक़ार इंसान और इंसानी ज़िंदगी का होता है, इदारों की इज्जत और वक़ार नहीं जिम्मेदारियां होती हैं। अब कितनी खूबसूरत बात उन्होंने बोली है। आप आखिरी वाली बात में कितना वज़न है, तो आप देखें कि जिम्मेदारियां होती हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से हर चीज़ जो है वो आपकी जो है उसको सारा जवाब मिल जाता है। तो बड़ी खूबसूरत बात हमने आज शाम आपके सामने ये शेयर की है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये बात पसंद आई होगी। सोशल इशू क्या है? सोशल इशू ये है जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो एक्चुअली सोशल तो ऐसा नहीं था। एक निजी टीवी है, वहाँ पर एक गेम शो आ रहा था और उस गेम शो में ऑन ईयर जो है वो एक पार्टिसिपेंट ने जो है वो एक बंदे को, यानी कि जो लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था उस शो में, उसको थप्पड़ मारना शुरू कर दिए और होस्ट को, यानी कि उसके प्रोग्राम के जो मेज़बान थे, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने गेम का कार्ड जो है वो थ्रो किया और वो गेम शो जो है वो एग्जिट करके चले गए। और ऑन एयर जो है वो जो कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आप किसी प्रोग्राम, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो अपने स्टेट को और दुनिया भर में आपके चैनल्स को देखा जा रहा होता है और जो इस तरह के बच्चे हैं, ये हैं तो बच्चे, लेकिन इनकी तरबियत का पे बड़ा सवाल उठ जाता है कि किस तरीके से आपने माशरे में हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। तो वो ऑन ईयर जो है वो थप्पड़ मार रहे हैं। बेशक आपका आपस में मजाक हो और आप थप्पड़ मार रहे हैं उसको। एक ये बहस हमने देखी और दूसरा लोगों ने कहा कि एंकर को इस तरह के अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए थे। एंकर ने क्या अल्फाज अदा किए वो आपके सामने रखेंगे। एंकर ने कहा कि कहाँ से बुला लेते हैं इन जाहिल लोगों को, और बहुत ही बदतमीजी से कहा। तो सोशल मीडिया पर ये चीज़ जो है डिस्कस हो रही है कि क्या फैसल कुरैशी ने सही बात की या नहीं की, ये आपने फैसला करना है हमारी इस वीडियो को सामने रखते हुए कि आप देखें कि आप क्या समझते हैं कि फैसल कुरैशी को गुस्से में ये बात की उन्होंने, तो उनको नहीं करनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा फीडबैक है, वो शायद काफ़ी दिनों से इस ऑडियंस को टॉलरेट कर रहे थे। मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है फैसल कुरैशी, एक बहुत अच्छे अदाकार हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और मैंने हमेशा उनको अपने बड़ों की इज़्ज़त करते हुए देखा है। और यही वजह है कि आप जब अपने बड़ों की इज़्ज़त करेंगे तो आपके आने वाले भी होंगे तो वो भी आपकी इज़्ज़त करेंगे और फिर आप उनसे भी एक्सपेक्ट करते हो कि ये भी हमारी इज़्ज़त करें। तो रिस्पेक्ट वाला मामला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और फैसल कुरैशी को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने